हेलो चिल्ड्रन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फिगर्स A and B? Two figures have been given to us, figure A and B, and it is asked among these following statements which statement is correct. So here the key concept it is nodule formation in leguminous plants. Nodule formation in leguminous plants. यहाँ जो फिगर आपको दिख रहा है वो किससे रिलेटेड है? वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में नोड्यूल फॉर्मेशन से रिलेटेड है. अब इस फिगर्स में कौन से फिगर्स सही हैं या ये जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इन ऑप्शंस में से विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, तो उसके लिए सबसे पहले हम नोड्यूल फॉर्मेशन की स्टेप्स पढ़ते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स related with the nodule formation. So the first step related with the nodule formation is we know that a number of rhizobium bacteria they are present in the soil. So these rhizobium bacteria they come in contact with a susceptible root hair. यानी सॉइल में बहुत सारे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या करते हैं कि जो ससेप्टेबल रूट हेयर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को, उन ससेप्टेबल रूट हेयर्स के पास आके कलेक्ट हो जाते हैं. सो दीज राइजोबियम बैक्टीरिया दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ अ ससेप्टेबल root hair, and what do they do after collecting? They divide near it. They start dividing near it and start dividing near it. The second step here, when the rhizobium bacteria they start dividing near a susceptible root hair, then what happens? These rhizobium bacteria they release a nod factor. This nod factor it is responsible for the curling of the root hair. So this nod factor it is secreted by the bacteria, and this nod factor causes curling of the root hair. Fine. अभी जब नॉट फैक्टर बैक्टीरिया ने सिक्रीट किया तो रूट हेयर जो है वो कर्ल होना स्टार्ट हो गया, और जब रूट हेयर कर्ल होना स्टार्ट हो गया तो एक इन्फेक्शन थ्रेड बनना स्टार्ट हो जाएगा. एंड infection thread
containing the bacteria is formed. नॉट फैक्टर सिक्रीट किया, सिक्रीट करने के बाद कर्लिंग हुई रूट हेयर की और एक इन्फेक्शन थ्रेड बनना स्टार्ट हो चुका है. अब ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है ये क्या करेगा, इट विल ग्रो अलॉन्ग विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, यानी जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड होंगे, वैसे वैसे ये इन्फेक्शन थ्रेड भी बढ़ता जाएगा. और ये कहाँ तक चला जाएगा, बढ़ता बढ़ता ये चला जाएगा कॉर्टेक्स तक. इन्फेक्शन थ्रेड grows along with the multiplication of the bacteria. इट ग्रोज अलॉन्ग विद द मल्टीप्लीकेशन, यानी जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे इन्फेक्शन थ्रेड भी बढ़ता जाएगा और फाइनली कहाँ तक पहुंच जाएगा, एंड इट विल कैरी दीज बैक्टीरिया टू द कॉर्टेक्स. जो रूट का कॉर्टेक्स पार्ट है वहां तक ये इन्फेक्शन थ्रेड चला जाएगा एंड इट विल कैरी दीज बैक्टीरिया टू द कॉर्टेक्स. अब देखिए कॉर्टेक्स में जाने के बाद ये क्या करेगा, ये जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वहां ये कॉर्टिकल सेल्स डिवाइड होंगी एंड दीज कॉर्टिकल सेल्स विल फॉर्म द नोड्यूल. हियर द सेल्स विल डिवाइड. जब ये इन्फेक्शन थ्रेड यहाँ तक पहुंच गया कॉर्टेक्स तक, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद कॉर्टिकल सेल्स में डिवीजन होगा और रिपीटेडली वो डिवाइड होकर वो बना लेंगी नोड्यूल. And form the nodule. So these are the different steps related with the nodule formation. Now let's see with the help of diagram. See, see, these are the bacteria which have aggregated, which have collected near the root hair cells. Fine. Now, what happens in the second step? These bacteria, they have released a factor, not factor, and they made these curls on the root hair. Now the curling of the root hair is started and the formation of the infection thread has also started. See, the bacteria, it has entered into the root hair and it has started forming the infection thread.
So the infection thread, it has been formed and it will grow along with the multiplication of the bacteria and it will reach here in the cortex part. And finally, nodules will be formed when the cortical cells, they will multiply again and again and they will form the nodule. So these are the different steps of nodule formation. Now we are moving back again to the question and see the options. So here the first option, so the question it is asking which options among the following is correct. So the first option, root hair, it is infected in A only. So see in diagram A में क्या है, diagram में bacteria they have started collecting near the root hair. यहाँ पर infection start नहीं हुआ है. So this option is incorrect. Second option, root hair is infected in B only. See यहाँ सेकेंड में बी डायग्राम में आपको दिख रहा है कि बैक्टीरिया जो है उसने इन्फेक्शन थ्रेड बनाना स्टार्ट कर दिया है. जब कर्लिंग स्टार्ट हो जाती है रूट हेयर की, इट मीन्स इन्फेक्शन थ्रेड बनना स्टार्ट हो गया है. सो वी कैन से दैट द रूट हेयर इज इन्फेक्टेड इन बी. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ थर्ड ऑप्शन, रूट हेयर इज इन्फेक्टेड इन बोथ ए एंड बी. ए में तो इन्फेक्टेड है ही नहीं रूट हेयर, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. Root hair is infected neither in A nor in B. ये ऑप्शन भी incorrect है. So the correct answer of this question it is B. That is root hair it is infected in B only. आपको समझ आया होगा. Thank you.